Hello and welcome to News9 Live. My name is Brijesh Pandey and you're watching To The Point. And the issue which we are going to discuss today is that in the latest update on the Gyanvapi Mosque case, one of the 5 Hindu petitioners who were part of the Shringar Gauri has advocated for an out-of-court settlement. However, the other 4 plaintiffs in the case have rejected this proposal. The Anjuman Intijamiya Masjid say it would present the proposal to the committee for consideration. The Hindu side advocate Vishnu Shankar Jain stated that an out-of-court settlement isn't legally viable for the Gyanvapi case due to limitation under the Civil Procedure Code. In an interview recently, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had suggested that the Muslim community should offer a solution for the historical mistake. He said that the walls of Gyanvapi are screaming and he also made a statement which met with a lot of criticism when he said that, calling it a mosque will cause a dispute. So what are the key issues at play here and why is it challenging to consider an out-of-court settlement for the Gyanvapi matter? We're joined by Harishankar Jain, who's a senior advocate in the Gyanvapi case, Mufti Maulana Nadimuddin, who is President All India Ulema Council, and Sanjay Rana, who is a political analyst. But before I go to my esteemed guests, let's first play to what Yogi Adityanath had said about Gyanvapi Masjid case and how he said that the Muslim side should correct the historical mistake. Let's listen in. देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है। हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझकर के ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। There you heard UP Chief Minister Yogi Adityanath saying that the Muslim side should come forward and accept that this has been a historical blunder and should make attempt to change that historical blunder. What happened yesterday was that one Hindu side representing Vishwa Vedic Sangathan Sangh proposed an out-of-court settlement of the Gyanvapi Mosque dispute and wrote a letter to Anjuman-e-Intizamiya Mosque committee that regulates the affair of the Gyanvapi Mosque in Varanasi, and immediately after that cracks appeared. There's a vociferous rejection from the other four petitioners in this particular case, and Vishnu Jain, who's a leading advocate for the case, has completely ruled out. Let's listen into what the other petitioners have to say about the proposal which has been made by one Hindu side representing Vishwa Vedic Sanatan Sangh, and after that we will resume our conversation. समझौता नहीं करेंगे, किसी भी हाल में हम लोग समझौता नहीं करेंगे। भगवान की संपत्ति है, अब भगवान की संपत्ति से किसी को समझौता नहीं करेंगे। लीगल भी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मंदिर हमारा है, मंदिर की जमीन ही हमारी रहेगी। ये लोग आज हम लोग समझौता करें, कल ये लोग अयोध्या वाला बोल देंगे कि अयोध्या की तरह हमको कहीं और जमीन दीजिए, तो हम लोग नहीं देंगे और ना हम लोग समझौता करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को जो है धन्यवाद देते हैं कि मुस्लिम समाज से उन्होंने कहा कि यह वाद जारी करना चाहिए। विगत कालखंडों में जो मुस्लिम समाज से गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का यह मौका है। यह वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए एक प्रस्ताव था। उनके ही परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम समाज या उनके अनुयायी या उनके जो भी हो, यह बात करने के लिए अगर आते हैं तो स्वागत है। ऑर्डर 23 सीपीसी में ये क्लियर प्रोविजन है कि जब तक सारी पार्टीज एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ,
जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज भी चाहे अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के तैयार नहीं है। So it's very clear that, both sides have drawn the line and they have made it amply clear that, we are not going to be party to that proposal which has been sent by one Hindu side. I'm joined by Harishankar Jainji. He's a senior advocate in the Gyanvapi case, and also by Mufti Maulana Nadimuddin, who's of All India Ulema Council. First, I'll come to you, Mr. Jain. Sir, you heard the proposal which was made yesterday by one of the Hindu side, saying that there should be an out-of-court settlement because we should not, get religion in this entire thing and, go for an amicable solution to the entire problem. How do you react to that, sir? One thing, the proposal has not been made by any party to the litigation. If only there is one plaintiff out of several cases, I filed 6 cases, and about you may say 30 to 40, about 30 plaintiffs are there, except one. None is saying and none will support in any manner the compromise issue. Question is why? Why we should go for a compromise? One thing is certain, that in compromise, there is always give and take. You cannot give me, I can't give you. Only one thing is possible, that Muslim must apologize for the historical wrong and say they are vacated. But the question is that the land belongs to the Almighty. Land belongs to Lord Shiva. How we have no right? It goes to fundamental question. Hindus have no right to give any piece of land of deity to any person. Number 2, none of the Hindu community, none of the members of the Hindu community, we are not ready for any settlement. We want that we should fight in court and there should be court verdict. Whatever the court says, that is verdict. And every party has to follow. Very peacefully, SI survey is going on. What will happen, God knows. But I am sure at the time of filing the application that truth will come out and we will be able to prove that present structure has been raised after demolishing a Hindu temple. We will win and we will construct a new temple there after removing the present so-called structure. It is not a mosque. If you enter into a house of someone, if you enter in the temple of Hindus and forcibly occupy the same, it will not be a mosque. You are encroacher. You are encroacher. You are nothing. Your purchase is illegal. Therefore, there is no question any compromise. Only thing is that Yogi ji has said, Yogi ji also offered. He has offered that you must realize the reality of the situation. You must surrender this so-called mosque to Hindus, saying that you are shameful and you apologize for the wrong committed by Aurangzeb and for occupying the premises by you for a long time. Second thing, the persons who are advocating for this, there is only 1 or 2 persons, at the most 3 persons, who can say that we are supporting this. But 99.9% of Hindu population, of Hindu majority, is not ready for it. Only some leftists may support, I can't say. But Sanatan Dharmis, who believe in Sanatan Dharma, are not ready at all to support this. So, the substance is that we wanted to glorious temple. Number 8, we want that the present structure be removed from that place. Number 3, we should pray there, we should perform our religious functions without any interference. Or fourthly, we want a court verdict, whatever the court decides. Why we are offering? And why the person offered, I may remind,
Hindu public. Then on 8th May, I've got the appeal in writing given by the person who said that we want to withdraw the suit. And Mr. I want to, Pandaji, I want to apprise you that it is wrong to say that only one suit or only 5 ladies are there. The 6 suits I have filed, and in 6 suits they are comprising of so many persons, and relief is the title suit for title about the entire property, and then different dimensions. We want that 5 crores of Adityanath area, which was created by Lord Shiva himself. 5 जिसको बोलते हैं हिंदी में 5 कोस का एरिया, अवमुक्त एरिया, वो फ्री होना चाहिए। वो किसी दूसरे रिलीजन की इबादत या कुछ नहीं हो सकती। But Harishankar Jain ji, I heard you. You know, Mr. Jiten Singh Visan, who is a founder of this Sangh and represents one of the 5 women petitioner, Rakhi Singh, you know, he made some very interesting observations in the letter. He said that some anti-social elements were out to benefit from the ongoing dispute, which is dangerous, not just to the communities but also to the country, and it was duty of both sides to peacefully and amicably resolve the dispute. Who, according to you, sir, he is referring to as anti-social elements in this thing? I say those who are saying, and those are saying for any compromise, who out of several plaintiffs, out of 30, only there are 3 persons. 3 persons are there who may support this proposal, and 99% of the plaintiffs, they are not going to support. Who is anti-social, who is not anti-social, who is I am not going to this, and I will not criticize at the same time any Hindu organization for the sake of Hindu unity. But I will say there is no question any compromise, and people should be cautious. Some elements have developed. The traitors who want to divide Hindus, who want to weak Hindus, and we will not accept that. And 99% Hindus are with my proposal, with my thinking that we want a free temple of Lord Shiva as was established by him crores of years before, lakhs of years before. Okay. Maulana Nadimuddin ji, you heard the proposal. You know, what do you make of the proposal? देखिए, अभी हरिशंकर जैन जी बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, और मैं उनका माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा हिस्टोरिकल मिस्टेक किया है जी, हम हिस्टोरिकल मिस्टेक को करेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि अतीत का तुलना अगर वर्तमान से करना है तो 86,000 स्तूप अशोका ने बनवाए थे, कहाँ मिट गए वो, कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ चले गए? अतीत का तुलना अगर करेंगे वर्तमान से तो बहुत कुछ खोजना पड़ेगा। ये विवेकानंद स्वामी जी ने एक मंदिर के बारे में क्या कहा है, प्रसिद्ध मंदिर है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि बौद्ध कभी मंदिर था। आज अतीत का तुलना अगर वर्तमान से करेंगे तो सिर्फ मैं कहता हूँ कि मुगलों से इतिहास नहीं है। 1760 में औरंगजेब का जीत हो गया था। 1770 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी का नवनिर्माण किया था। उन्होंने मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाए थे। अहिल्याबाई होलकर ने भी उसको माना था। ये कहीं प्रूफ नहीं है तो औरंगजेब ने उसको तोड़ करके मंदिर बनाया था, ये कहीं प्रूफ नहीं है। 1936 में में भी मंदिर पे और मस्जिद के अस्तित्व को माना है, मामला सब जुड़ी से। आज शिवलिंग कहा जा रहा, मैं उनके आस्था का सम्मान करता हूँ। पहले शिवलिंग का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो महिलाएं गई थी श्रृंगार गौरी से पूछने के लिए गई थी, ज्ञानवापी मस्जिद से तो नहीं गई थी। दूसरा करते इसके बाद सर्वे को लीक किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ 24 के इलेक्शन के लिए एक जो है तमाशा किया जा रहा है। 91 का वर्षित बनने के बाद अब ये क्या हो रहा है? तो मैं कहता हूँ कि संविधान हमारा कब लागू हुआ? 95 में 50 में संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद क्या हो रहा? मैं कहता हूँ कि मुगलों की गलती से क्या आज के मुसलमानों को सजा दी जाएगी। जलियांवाला बाग में जो तंग हुआ था क्या इसकी सजा आज के ईसाइयों को दी जाएगी? तो मैं कहता हूँ कि ईसाइयों को
सजा नहीं दी जाएगी तो मुगलों ने क्या किया उसका बहुत सोचना पड़ेगा। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, सोचना पड़ेगा। मामला सरजूदी से मैं कहता हूँ, कहते हैं कि मेरा मंदिर है, तो कैसे आप कह रहे हैं मामला सरजूदी से? जितना आपके प्रूफ है उनके अदालत के अंदर रखिए, अदालत के अंदर रखिए। मगर मेरा एक डिमांड है कि सरकार इसके अंदर स्टेट कोर्ट बनाए और कोर्ट में लेकर करके इसका मसला से जल्द हल करे तो ज्यादा बेहतर है। मगर इस के बारे में भी कह रहे हैं, इससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा। जब राजेंद्र तिवारी ने, पहले राजेंद्र तिवारी, आज कहते हैं कि मुसलमान उसको फाउंटेन कह रहे हैं। राजेंद्र तिवारी ने क्या कहा था कि काशी के पुरोहित है, उन्होंने कहा था कि वो फाउंटेन है। मुसलमानों को बाद में कहा अगर आप मान लिया जाए शिवलिंग है जैसा कि आप कह रहे तो मुसलमानों को तारीफ करना चाहिए कि मुसलमानों ने इसको साल से बचा के रखा है। मैं कहता हूँ कि मंदिर से ज्यादा बीजेपी का एक षड्यंत्र है। आज नाथ योगी, इससे पहले पार्लियामेंट के लीडर रह चुका महंत, उन्होंने क्यों नहीं उठाया ज्ञानवापी का? आज भी क्यों उठा रहे? पार्लियामेंट अधिवेशन के बाद बीजेपी 1986 में पार्लियामेंट अधिवेशन के बाद राम मंदिर में जिससे इससे कराई है बीजेपी खुल करके आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, इस देश में मुसलमानों को डराने का षड्यंत्र किया जा रहा कि आप धर्म धर्म के नागरिक है, आप सुधर जाओ। आज ज्ञानवापी है, मथुरा है, ये मामला कहाँ जा करके जरूर गई। मैं कहता हूँ कि 5वीं सदी में, 6वीं सदी में सुंदर राजा ने मंदिर तोड़ा था और फिर मैसूर के अंदर हिंदू राजा ने मंदिर तोड़ा था। तो अगर काशी का नवनिर्माण हुआ किसने मंदिर तोड़ेगा? तो मैं कहता हूँ ये कुछ तुलना अगर काम से करेंगे एक बिहार कहाँ लुप्त हो गया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन जी, ये जो चिट्ठी आई है, क्या मुस्लिम पक्ष इस तरह के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कुछ सोचता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है। ये कहते हैं कि आप मस्जिद छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ कि मस्जिद नहीं छोड़ेंगे तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा। तो टेंडर में दोनों एक साथ होकर के सेटलमेंट न करें तो सुप्रीम कोर्ट है बाबरी मस्जिद में खुलने के लिए उस टाइम नहीं हुआ, अब कहाँ से होगा? अरे मथुरा में समझौता हुआ सर, समझौता दोनों पक्ष के बीच में हुआ, इसके बाद उन्होंने तैयार नहीं है हम करने का कोई तत्व नहीं। 10 में मेजोरिटी लॉ है, क्या बहुमती है, आपसे ताकत है, आपसे कुछ आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 25 करोड़ मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाल दीजिए, पूरी मस्जिद गिरा दीजिए। कहाँ तक नहीं बिल्कुल। मैं हरिशंकर जी एक बात है देखिए, जो होलोकॉस्ट में हुआ तो हिटलर ने जर्मन में यहूदियों के साथ किया, वो मुसलमानों के साथ ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं अब नदीमुद्दीन जी मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा और मैं उस लेवल पे हमारा डिबेट है कि जो होलोकास्ट में जूस के साथ हुआ मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन हरिशंकर जैन जी, जो अभी मौलाना नदीमुद्दीन जी ने कहा कि व्हाई वुड द करेंट मुस्लिम्स पे द प्राइस फॉर द सिंस कमिटेड बाय मुगल्स? मुगलों के द्वारा जब किया गया जो भी अत्याचार किया गया उसका खामियाजा आज के मुसलमान क्यों भुगते हैं? Why the current generation? Who is saying? Who has said that to pay the price? You wanted they should pay the price. You could not have done it in India. Where we have said? We have not said so. They are playing victim card unnecessary. The question is that historical wrong has been committed, and the price is not a price. You are not paying price. If it comes out, very simple thing, and I'm saying very thing which is according to law and justice. If it is pointed out, it is proved, not without proof, it is proved that it was a Hindu temple and somebody demolished. Suppose you are offering namaz there under wrong notion that it is mosque, but once it is proved it is not mosque, leave it. We are not saying that we will do something out of court. We are saying through court. Just come to the court. And only thing is, and my only demand is, if it is proved
that is the Hindu temple. Then you leave. Otherwise, leave. Otherwise, continue petition. You will offer namaz, you go using mosque. Who is disturbing you? They do not want to accept the reality. Why? If something was committed with Dalits in past, we accepted. Hindu society accepted with open mind. Yes, wrong was committed with you in the past, though during Muslim rule, during British rule, and we are saying that you will get reservation. We are giving reservation. We are approved reservation, and it is the Hindus. It is the heart of Hindus so high that we are saying yes, there should be reservation for Dalits because of the past. Even though no wrong was committed by Hindus, wrong was committed by Muslims. We are not the rulers of the country for the last about 800 years. It was the Muslims and the British. Wrong was committed within that time. The Dalits. And we are saying yes, you should. We are paying the price and say that reservation should be there. And they should come with a part with other persons. Other men, they should come in the ministry. You say, but why? This much cannot be done by Muslim community. आज मुस्लिम कम्युनिटी में इतना आत्मबल क्यों नहीं है वो कह सके कि हाँ हमसे गलती हुई है या हमारे पूर्वजों से गलती हुई है या अंडर रॉन्ग नोशन वी आर वर्शिपिंग हियर वी आर काइंडली कंसीडर इन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली accepted. Dr. Ambedkar said and we accepted. He was right. Ambedkar was right. And Ambedkar said also that after partition, every Muslim should go from this country. Even then, there was no hue and cry. Nobody said, enforce this. What Ambedkar is saying, enforce it. No. We accepted you. But not for this. That will always play with our sentiments. Not for this purpose. That go on damaging our sentiments and day to day causing insult to us. Because in the past, the Lord Shiva temple, which were demolished, and you go on worshipping there, or offering namaz using, as a mosque. It is a great insult to Hindu Asmita, and we can't tolerate it. Maulana Nadimuddin ji, yes, I'll come to you, sir. Yeah, you are raising your hand. जी बताइए. नहीं, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं. मेरा मानना ये है कि आप कब तक गड़े मुर्गे उखाड़ेंगे, अतीत का तुलना वर्तमान से करेंगे. मैं कहता हूं कि बाबर आया देश में, बाबर के साथ कितने मुसलमान आए थे? 1500,000 आए थे. 25 करोड़ मुसलमान है. तो मुझे क्या देने देना? पूरे भाड़ में जाए मुगलों की काम औलाद नहीं है, मुगलों की कम संतान नहीं है. मुगलों की क्या है के दौर में बुद्ध मौर्य शासन की जरूरत है. तो मुगलों को नहीं बच्चों, मुगल आए थे, लुटेरे थे, अंग्रेजों की पैसा भाग यही मरे, यही रखा है. तो मैं कहता हूँ कि डिबेट करना है तो 1000 साल आइए, 1000 साल पहले डिबेट करिए. मंदिर मस्जिद का झगड़ा अगर हुए तो मैं कहता हूँ चलिए हल हो गया. उसके बाद ये मथुरा आएगा, उसके बाद 30,000 फौज में चली जाएंगे. भाई कहाँ किताब लड़ेंगे, कहाँ किताब झगड़ा करेंगे? बातचीत अगर बैठ करके हल होता है तो हल होगा. मेरे बातचीत कैसे हलेगा? मैं कहता हूँ कि मामला है, आप कह रहे हैं स्कूलिंग है, मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ. मामला अदालत में निर्णय करने दीजिए. अदालत से पहले आप अदालत मत बनिए, अदालत को प्रभावित मत करिए. योगी जी ने क्या कहा कि मुसलमानों को निजी देना चाहिए, बोला उन्होंने. क्यों नहीं कर रहे? मैं मानते क्यों नहीं करे? आज उनको क्या जरूरत नहीं. जो शायद पहले को तो मुख्यमंत्री थे, वाजपेयी के जमाने में वाजपेयी शासन था. आज क्या कहना था? भाजपा हर मुद्दे हो चुके हैं. 2024 में मोदी सरकार की फिर से आने इसको ज्ञानवापी मस्जिद का सहारा लेना पड़ रहा. मैं कहता हूँ कि मामला छोड़ दीजिए, अदालत में हमारे हक में है तो हम मानेंगे, आपके हक में तो आप मानिए. मतलब ये कहना कि मुगलों ने तोड़ा है, इसने तोड़ा है,
उसने तोड़ा है, यहाँ तोड़ा है, वहाँ तोड़ा है, किसी ने कह दिया कि जामा मस्जिद में हमारा है, किसी ने कह दिया फलां हमारा है। कहाँ क्रिटिसाइज करेंगे आप? कहाँ तक आप जाएंगे? मामला अदालत में जा चुका है। मैं कहता हूँ 1950 में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद तो संविधान से पहले जनरल राज था, उसके बाद जनरल राज की तुलना संविधान से करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप तुलना कर रहे, मुझे तुलना कर रहे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देश कहाँ चला गया? 84,000 कहाँ गए हो गए? उनसे रुपये सुधार जरूरत आप डिबेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्या करना चाहते। मंदिर मस्जिद का मामला से और हरिशंकर जैन जितना आपसे टीवी में आप बोल रहे उससे ज्यादा प्रूफ वहां रखे तो ज्यादा बेहतर है। मेरे तुमको कहता हूँ सहूलिया भाई होल कर दो डी मोहम्मद प्रोफेशनल 1936 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको मस्जिद माना है और इसके लिए रास्ते लगती है। ये सच है, सच है। हरिशंकर जी, आपने सुना अभी मौलाना नदीमुद्दीन जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अंत कहां होगा, आखिर रुकेगी कहां गाड़ी? यदि यदि इतिहास के सारे राइट्स को रॉन्ग को राइट करने में लगेंगे तो अंत कहां होगा? फिर इसके बाद मथुरा मस्जिद का वो आएगा, फिर उसके बाद बाकी अन्य मस्जिदों का नंबर आएगा। इसका एक जवाब है कि जो पाप हैं सारे पाप सामने आएंगे। हिंदू जाग चुका है। ये सब बातें बेवजह की बातें, सहिष्णुता सद्भाव, ये सब बेकार की बातें हैं। अब मतलब नहीं रहा क्योंकि सहिष्णुता सद्भाव सेकुलरिज्म इट कांट बी वन साइडेड। और इफ यू वांट दैट वी शुड नॉट demonstrate or we should not assert our right in a constitutional manner. I put a question. What is the meaning of constitutional democracy? What is the meaning of the constitution? We have gone, we are fighting in court. What is the problem? We are not agitating. We are not like Shahin Bagh, CA, Andolan. We are not saying that we have blocked the path. We are not there. It's not पत्थरबाजी। क्या आपने कश्मीर में पत्थरबाजी की या जहां भी नू में पत्थरबाजी की? हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। लीगल मैनर में, इफ लीगली वी आर invoking the power of the court, we are asserting our right. What is the harm? On number two, when a wrong has been committed in the past, you have played with the sentiments of Hindus. Even after independence, Hindus cannot claim their right. What is the meaning of independence? Muslims have got Pakistan. All the Hindus have been massacred, or they have been converted to Islam. And in Hindu country, we can't say for our establishment of our culture, our temples, our Aradhadev. Why we can't say? And you say this at the cost of division of the country, that Muslims cannot live with Hindus. It was said by Jinnah. And that is why it was said at that time that all the Muslims must go to Pakistan. But Hindus said no, not necessary. We want to live in peace, live it. I will repeat at the cost of repetition that we can't be suppressed forever. And a Hindu country, we cannot have our culture. No, it is not possible. Enough is enough. Enough is enough. When we say, you have entered in my house, suppose because at that time we were not powerful, we were not awakened, we were slave. Now we have come out slavery and we want to exercise our right. On this pretext, on this, you are threatening land order situation. Then we know how to maintain land order situation. We know. Land order situation will be maintained at any cost, and we will get our right according to constitution by legal means. Why Muslims are threatening? Why they say there will be chaos and disorder? We can't bend, we can't surrender
our right. Okay. Mr. Jain, I'm coming to you. Mr. Jain, I'll come back to you. Maulana Nadimuddin ji, you heard that Mr. Jain is now saying that, the Muslims, Hindus can't be suppressed anymore. And नहीं देखिए वो बहुत कुछ मेरा अभी 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 कहता हूँ कि सतीन अवस्थी घर में किसने स्टोन फेंका। मैं कहता हूँ कि शोभा यात्रा में तलवार और वेपन लेके कौन चल रहा है। उन्हीं के एक मंत्री ने कहा कि ये वेपन लेके जाने की क्या जरूरत है। गुरुवार में जो कहा है वो उसकी लड़ाई है। गुरुवार की खास जो है तो माइनॉरिटी के बारे में गुरुवार में क्या ज्यादा बेहतर जानते हैं। मणिपुर में माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ, हरियाणा में घर जलाए, घर को कैसे वेरिफिकेशन लगाया गया। मैं कहता हूँ कि मोनू मानेसर का से नहीं चलाया गया। मेजॉरिटी के लिए एक कानून है और इसके लिए एक कानून है। भूषण को क्यों नहीं उसके घर को जलाया गया, उसी घर को ये बिल्डर चलाया गया। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ कि जब लॉ है तो सख्त लागू होने की जरूरत है। किसी ने सर फेंका, हमने उसकी निंदा किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज भूषण को के तहत उस पर हुआ, के तहत जो एफआईआर होता है उसमें गिरफ्तारी जरूरी होती है। क्यों वो गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों गिरफ्तार नहीं कराया गया, क्यों किसानों को रोक डाला, क्यों घर को नहीं चलाया गया। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो कुछ कहा है कि बातचीत के जरिए मसले को हल करो, मगर मामला से जुड़ते अदालत में निर्णय करने दीजिए। Harishankar, I'll come to you, sir. Harishankar Jain ji, it is also being alleged. Harishankar Jain ji, it is also being alleged that that this entire thing is to keep the pot boiling, for 2024 general election, and it is also said that that there is a concerted attempt to further inflame the situation, and he has made references to the video of Monu Manesar, which many believe is the reason behind violence in Nu. So you think that this is the pot is being kept boiling for 2024 general election? Okay, I want to clarify that this issue is connected, but not the case with the election. And I clarify both. The case was filed in 2021. 16th August 2021 is the case. When it was filed, August 21, and thereafter some before that in August, in 21 itself. That is 3 years before. Who prolonged this case? It was the Muslims. On one point or the other, they said that no, case can't continue and they can't, it is maintainable, and we have to waste our time in that. Number one. Number two, very well connected with election, because election does not take place for nala panala, for road. It is for the municipal work. The local parties election, it is seen. The major issue of the religious sentiments of the majority public, the cultural heritage of the country, and what is the view of the contesting parties. It is not the manifesto of any party. It is the charter of the voter. As a voter, I appeal that we will give vote for those political parties who support revival of Hindu temples and Hindu culture in the country. Okay. It is our demand as a voter. Okay. I appeal as a voter that we will not vote against to those parties who does not support us. Not to question any party. And this issue will be a factor for voters in 2014 for giving vote. And we will not vote to those political parties who cannot support us in revival of temples, in revival of our culture. Okay. And all the temples which have been broken, which are found to have been broken, they should be
freed Okay. from the clutches. Okay, of the that was Mr. Harishankar Jain, who is a senior advocate in the Gyanvapi case, and also Mufti Maulana Nadimuddin, who is president of All India Ulema Council. Thank you so much, gentlemen, for coming to our show and clarifying our show to the point and clarifying about your viewpoint on the letter which has been written by one of the 5 plaintiffs for fighting a case against the Gyanvapi Mosque. That's it from To The Point, but we'll also go to another story, another tragedy which is unfolding in the two-hill state, Uttarakhand in Himachal Pradesh, which has witnessed severe natural calamity and has been ravaged by floods and all. Horrific scenes are coming. 71 people are dead in Himachal Pradesh, and the toll continues. Let's watch it. This. Hello and welcome to this News 9 special. We are in fact trying to look at what is the latest happening in the Himalayan states where rain has caused so much of havoc, and also in the downstream state of Punjab as well, where flooding has been reported. These were the visuals that we in fact got you yesterday about this huge landslide that happened in Shimla, and how it is one of the most shocking visuals to have emerged that actually pins in the fact that the disaster at the hillside has been always there, especially when it came to the rains, and this clearly did have a huge impact when it came to the issue about how things were in fact moving, especially due to the landslides. And there are rescue operations still continue in Himachal Pradesh and in Uttarakhand. Flooding has also been reported in Punjab. Several highways had been blocked due to slides in that area. बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। Well, massive rescue operations are on in Himachal as well as in Uttarakhand. The SDRF, the state disaster relief force, as well as the NDRF have been pressed into service. Helicopters of the IAF has also been pressed into service as well. This is to reach areas that have been continually being inaccessible, and these are visuals coming off a rescue operation in Shimla, where people are at the rooftops of their homes because of the flooding, and they are being evacuated from the rooftops of their homes. That's the only option that they have, because many of them have been completely stranded because of the kind of flooding that has been reported in many areas of the place. And these are rescue operations that have been carried out in Shimla. You can see how the rescuers are trying to pull the person out from the rooftop of their homes. Again, we have visuals coming in where rescue operations do continue at the landslide areas as well. As I said, one of the biggest troubles for them is to